जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को, अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए एवं इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकारों का न होने देना, यही शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। चित्त जब तक गंगा जल की तरह निर्मल और प्रशांत न हो जाए तब तक निष्कामता नहीं आती। इसलिए चित्त संशोधन के लिए जो जो कर्म किए जाएं उन्हें गीता यज्ञ कहती है। काम और क्रोध को जीतना एक महान यज्ञ है। बाह्य संयम का विशेष लाभ नहीं। बाहर मैंने लंगोट लगाया है, ब्रह्मचारी रहने का स्वांग रचाया है, परंतु अंतर में मेरा हृदय रमणियों के नेत्र कटाक्ष एवं सुंदर मुख मंडल और उनके साथ सहवास का चिंतन करता रहे तो ऐसे ब्रह्मचर्य का आंतरिक लाभ कुछ नहीं। इससे कहीं ऊंचा ब्रह्मचारी वह है जो गृहस्थ में पदार्पण कर अपनी विवाहित स्त्री के अलावा हर दूसरी स्त्री को माँ, बहन और बेटी की निगाह से देखता है और निरंतर हृदय को ईश्वर चिंतन में लगाए रखता है। कर्म के साथ मन का मिलन जरूरी है, तब ही सच्ची चित्त शुद्धि प्राप्त हो सकेगी। ऊपर से हम किसी को नमस्कार करते हैं, परंतु सिर को झुकाने की उस ऊपरी क्रिया के साथ ही यदि भीतर से मन भी न झुकता हो तो बाह्य क्रिया व्यर्थ है। अंतर और बाह्य दोनों एक होना चाहिए। बाहर से मैं शिवलिंग पर सतत जल धारा गिराते हुए अभिषेक करता हूँ, परंतु इस जलधारा के साथ ही यदि मानसिक चिंतन की धारा भी अखंड न चलती हो तो उस अभिषेक की क्या कीमत रही। फिर तो सामने का शिवलिंग भी पत्थर और मैं भी पत्थर। पत्थर के सामने पत्थर बैठा, यही उसका अर्थ होगा। हमारा कर्म यज्ञ का रूप तभी धारण करता है जब हमारे बाह्य कर्म के साथ अंतर से चित्त शुद्धि रूपी कर्म का भी संयोग होता है। शरीर और मन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इसलिए साधन भी दोनों के लिए भिन्न भिन्न ही है। जब दोनों का मेल बैठ जाता है तो साध्य हमारे हाथ लग जाता है। मन एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ ऐसा न हो जाए। इसलिए संतों ने भक्ति योग में बाहर से तप और भीतर से जप बताया है। उपवास आदि बाहरी तप के चलते हुए यदि भीतर से
मानसिक जप न हो तो वह सारा तप व्यर्थ चला जाता है। जिस भावना से मैं तप कर रहा हूं, वह भावना अंदर सतत जगमगाती रहनी चाहिए। उपवास शब्द का अर्थ ही है भगवान के पास बैठना, परमात्मा के नजदीक हमारा चित्त रहे। इसके लिए बाहरी भोगों का दरवाजा बंद करने की आवश्यकता है, परंतु बाहर से विषय भोगों को छोड़कर यदि मन में भगवान का चिंतन न किया जाए तो फिर इस बाहरी उपवास की क्या कीमत रही। ईश्वर का चिंतन न करते हुए यदि उस समय खाने पीने की चीजों का ही चिंतन करते रहे तो फिर वह बड़ा ही भयंकर भोजन हो जाएगा। यह जो मानसिक भोजन मन में विषयों का चिंतन रहा, उससे बढ़कर भयंकर वस्तु दूसरी नहीं। The four divisions of human life, namely brahmacharya, grahastha, vanprastha and sannyasa, are all meant to help men to become perfect yogi. Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals, the four orders of human life are fixed so that one may attain perfection in spiritual life. A real brahmachari under the care of a bona fide spiritual master not only controls the mind by abstaining from sense gratification, but engages his mind under the feet of the Almighty and sacrifices sound, the hearing process, and other faculties of senses into the fire of Brahm Yajna and sublimate them to achieve spirituality. Forms perceived by the eyes are beheld as the manifestations of the Lord. Sacramental food is partaken of with piety. The mind is put to hear the inner vibrations, shabd, of the Atman constantly. The sadhak starts smelling of the aroma associated with the worship of the divine and feeling the Holy Communion. All the faculties of sense organs are thus sanctified. The sensual is in this way transformed into the spiritual. Sex life, intoxication, and meat eating have become general tendencies of modern human society. But a regulated household does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratifications. Marriage on principles of religious life is, therefore, current in all civilized human societies because that is the way of restricted sex life. This restricted, regulated, and unattached sex life is also a kind of yajna because the real grihastha sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 4 श्लोक 26. इतर योगी कानांनी ऐकण्यासोबत सर्व इंद्रियांना संयमाच्या अग्नीत समर्पण करतात. इंद्रियांना नियंत्रणात आणणे, त्यांचं स्वातंत्र्य नष्ट करणे, त्यांची मन विचलित करण्याची शक्ती नाकारणे आणि त्यांना सांसारिक सुखा आणि नादांमध्ये रमण्यापासून रोखणे म्हणजेच इंद्रियांना संयमांच्या अग्नीत अर्पण करणे होय. इतर योगी शब्दासह सर्व इंद्रियांना इंद्रियांच्याच अग्नीत अर्पण करतात. म्हणजेच कानाद्वारे स्तुती आणि टीका, इतर कोणत्याही प्रकारचे अनुकूल किंवा प्रतिकूल शब्द ऐकणे, डोळ्यांद्वारे चांगले आणि वाईट दृश्य पाहणे, जिभेद्वारे अनुकूल आणि प्रतिकूल चवीच्या पदार्थांची चव घेणे आणि त्याचप्रमाणे प्रारब्धानुसार प्राप्त झालेल्या सर्व वस्तू इतर सर्व इंद्रियाद्वारे अलिप्तपणाने सेवन करणे.
हृदयामध्ये समता राखणे, भेदभावातून जन्मलेल्या प्रेम आणि द्वेष, आनंद आणि दुःख इत्यादी भावनांना उद्भवू न देणे, हे इंद्रियांच्या अग्नीत शब्द आणि इतर वस्तूंचे अर्पण आहे. जोपर्यंत मन गंगेच्या पाण्यासारखे शुद्ध आणि शांत होत नाही, तोपर्यंत वैराग्य येणार कसे? म्हणूनच गीता मनाच्या शुद्धीसाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व कृतींना यज्ञ म्हणते. वासना आणि क्रोधावर नियंत्रण मिळवणे हा एक महान यज्ञ आहे. बाह्य संयम विशेष फायदेशीर राहत नाही. मी कंबर कसून ब्रह्मचारी असल्याचे सोंग दाखवू शकतो, परंतु हृदयात जर खोलवर स्त्रियांच्या नजरा, त्यांचे सुंदर चेहरे आणि त्यांच्या लैंगिक अनुभवाचे चिंतन करत राहिलो, तर अशा ब्रह्मचारीपणाचा कोणताही अंतर्गत फायदा होत नाही. त्याहूनही मोठा ब्रह्मचारी तो आहे जो घरी किंवा बाहेर आपल्या विवाहित पत्नीशिवाय इतर प्रत्येक स्त्रीला त्याची आई, माता, बहीण किंवा मुलगी असे मानतो आणि आपले हृदय सतत ईश्वराच्या चिंतनात गुंतवून ठेवतो. मनाचे कर्माशी एकरूप होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच मनाची खरी शुद्धता प्राप्त होऊ शकते. आपण बाह्यरित्या एखाद्याला नमस्कार करू शकतो, परंतु जर डोके टेकवण्याच्या बाह्य कृतीमध्ये आतील मनात जर त्या व्यक्तीबद्दल आदर नसेल, तर बाह्य कृती निरर्थक आहे. आतील मन आणि बाहेरील कृती यामध्ये एकसारखी एकरूपता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. बाहेरून मी शिवलिंगावर सतत पाण्याचा अभिषेक करत आहे, परंतु जर मनाच्या मानसिक चिंतनाचा प्रवाह या पाण्याच्या अखंड धारेप्रमाणे वाहत नसेल, तर त्या अभिषेकाचे काय मूल्य? मग माझ्यासमोर असलेले शिवलिंग एक दगडच आहे आणि मी पण दगडासमोर बसलेला एक दगडच आहे. आपल्या बाहेरच्या कृतीप्रमाणे मनाचे शुद्धीकरणात सहाय्य करत असतील तरच त्या कृती किंवा कर्माचे यज्ञात रूपांतर होते. शरीर आणि मन हे वेगवेगळे घटक आहेत आणि म्हणूनच दोघांचे साधनही वेगवेगळे आहेत. जेव्हा दोघंही सुसंगत होतात तेव्हाच आपण ध्येय साध्य करतो. मन एक बाजूला आणि शरीर दुसऱ्या बाजूला राहू नये. म्हणूनच संत महात्म्यांनी भक्तियोगामध्ये बाह्य तप आणि मनातील अंतर्गत जप याची सांगड घालायला सांगितलेलं आहे. जर उपवास आणि अशा इतर पद्धती सारख्या बाह्य तपासह अंतर्गत जप नसेल, तर सर्व उपास तापास आणि सर्व तप वाया जातात. मी ज्या भावनेने तप करतो ती भावना सतत आत चमकली पाहिजे. उपवास या शब्दाचा अर्थच ईश्वराजवळ बसणे असा आहे. आपले मन ईश्वराच्या जवळ ठेवण्यासाठी आपल्याला बाह्य सुखांचे दरवाजे बंद करावे लागतील. पण जर एखाद्याने मनामध्ये देवाचा विचार केला नाही, तर या बाह्य उपवासाचे काय मूल्य आहे? जर त्यावेळी देवाचा विचार न करता अन्न पदार्थ, पेय पदार्थ, विविध फळे आणि त्यांचे कृती इत्यादींचा जर का विचार करत राहिलो, तर ते एक अतिशय धोकादायक अन्न बनेल. हे मानसिक अन्न मनातील इंद्रिय सुखांचा विचार यापेक्षा धोकादायक काहीही नाही. मानवी जीवनाचे 4 आश्रम म्हणजेच ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास हे सर्व मानवांना परिपूर्ण योगी बनवण्यास मदत करण्यासाठीच आहेत. मानवी जीवन हे प्राण्याप्रमाणेच इंद्रिय तृप्ती आणि उपभोगण्यासाठी नाही. मानवी जीवनाचे 4ही नियम निश्चित केलेले आहेत, जेणेकरून एखाद्याला आध्यात्मिक जीवनात परिपूर्णता प्राप्त करता येईल. एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूच्या देखरेखीखालील असलेला खरा ब्रह्मचारी केवळ इंद्रिय तृप्तीपासून दूर राहून
मनावर नियंत्रण ठेवत नाही तर सर्व शक्तिमानाचा चरणी आपले मन गुंतवतो आणि ध्वनी, श्रवण आणि इतर इंद्रियांना, शक्तींना ब्रह्मयज्ञाच्या अग्नीत अर्पण करतो आणि त्यांना अध्यात्म प्राप्त करण्यासाठी उदात्त करतो. डोळ्यांनी जाणवलेली रूपे ईश्वरांचे प्रकटीकरण म्हणून पाहिली जातात. धार्मिकतेसह संस्कारयुक्त अन्नाचे सेवन केले जाते. मनाला आत्म्याच्या आंतरिक स्पंदने, शब्द सतत ऐकायला लावली जातात. साधकाला परमात्म्याच्या उपासनेशी संबंधित सुगंधाचा वास येऊ लागतो आणि पवित्र सहवासाची अनुभूती येते. अशा प्रकारे इंद्रियांचा सर्व शक्ती पवित्र होतात. अशा प्रकारच्या इंद्रियामध्ये आध्यात्मिकतेचे रूपांतरण होते. लैंगिक जीवन, नशा आणि मांसाहार या आधुनिक मानवी समाजाच्या सामान्य प्रवृत्ती आजकाल बनलेल्या आहेत. परंतु एक नियंत्रित घरातील व्यक्ती अनियंत्रित लैंगिक जीवन आणि इतर इंद्रिय तृप्तीमध्ये सहभागी होत नाही. म्हणूनच धार्मिक जीवनाच्या तत्वावर विवाह सर्व सुसंस्कृत मानवी समाजामध्ये प्रचलित आहे, कारण तोच मर्यादित लैंगिक जीवनाचा मार्ग आहे. हे मर्यादित नियमन केलेले आणि अनासक्त लैंगिक जीवन देखील एक प्रकारचा यज्ञच आहे, कारण खरा गृहस्थ उच्च दिव्य जीवनासाठी इंद्रिय तृप्तीकडे असलेल्या त्याच्या प्रवृत्तीचा त्याग करतो. ജയ് ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 4, ശ്ലോകം 26. ചില യോഗികൾ കേൾവി മുതലായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സംയമനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അഗ്നിയിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നശിപ്പിക്കുക, മനസ്സിനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ അവയെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ ബലിയർപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റു ചില യോഗികൾ വാക്കുകൾ മുതലായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കാതുകളിലൂടെ പ്രശംസയും വിമർശനവും കേൾക്കുമ്പോൾ, അഥവാ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, കണ്ണുകളിലൂടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, നാവിലൂടെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ രുചികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സമയത്തെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സമത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച സ്നേഹം, വെറുപ്പ്, സന്തോഷം, ദുഃഖം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അഗ്നിയിൽ വാക്കുകളെയും മറ്റു വസ്തുക്കളെയും അർപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഗംഗാജലം പോലെ ശുദ്ധവും ശാന്തവുമാകുന്നതുവരെ വൈരാഗ്യം വരുന്നില്ല. അതിനാൽ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ഗീത യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാമത്തെയും കോപത്തെയും കീഴടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ യാഗമാണ്. ബാഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വലിയ ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്ന് നടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള നോട്ടം, അവരുടെ സുന്ദരമായ മുഖങ്ങൾ, ലൈംഗിക കൂടിക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രഹ്മചര്യം ആന്തരികമായി ഒരു പ്രയോജനവും നൽകുന്നില്ല. ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ താൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയെ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അമ്മ, സഹോദരി, മക്കൾ എന്നിങ്ങനെ കാണുകയും തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഈശ്വര ചിന്തയിൽ നിരന്തരം മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരി. മനസ്സും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലും ബാഹ്യമായി വന്ദിക്കാം, എന്നാൽ തലകുനിക്കുന്ന ഈ ബാഹ്യപ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം ആന്തരികമായും മനസ്സ് കുനിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. ആന്തരികവും ബാഹ്യവും ഒന്നായിരിക്കണം. ബാഹ്യമായി ശിവലിംഗത്തിൽ തുടർച്ചയായി ജലപ്രവാഹം നടത്തി അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസിക ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം ഈ ജലപ്രവാഹത്തിനൊപ്പം തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അഭിഷേകത്തിന് എന്തു വിലയാണുള്ളത്? അപ്പോൾ മുന്നിലുള്ള ശിവലിംഗവും
അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആളും ഒരു കല്ല് തന്നെയാണ്. കല്ലിനു മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ല്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രവൃത്തിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ രൂപമെടുക്കൂ. ശരീരവും മനസ്സും വ്യത്യസ്ത അസ്തിത്വങ്ങളാണ്. അതിനാൽ രണ്ടിനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. രണ്ടും യോജിപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സൊരു വശത്തും ശരീരം മറുവശത്തും ആയിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഭക്തിയോഗത്തിൽ സന്യാസിമാർ ബാഹ്യ തപസ്സും ആന്തരിക ജപവും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപവാസം പോലുള്ള ബാഹ്യ തപസ്സുകൾ ആന്തരിക ജപത്തോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തപസ്സുകളും പാഴാവുന്നു. ഞാൻ തപസ് ചെയ്യുന്ന വികാരം നിരന്തരം ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കണം. ഉപവാസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തായി ഇരിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഈശ്വരനോട് അടുപ്പിക്കാൻ ബാഹ്യസുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിൽ നാം അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാൾ ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിൽ ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ബാഹ്യവ്രതത്തിന് എന്ത് മൂല്യമുണ്ട്? ഒരാൾ ദൈവത്തെ അവഗണിക്കുകയും പകരം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഭയാനകമായ ഒരു ഭക്ഷണമായി മാറുന്നു. ഈ മാനസിക ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ മനസ്സിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതിൽ പരം അപകടകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పద్మ. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకం 26. శ్రోత్రాది ఇంద్రియాణ్యే సంయమాగ్నిషు జుహోతి శబ్దాదీన్ విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహోతి. ఇతర యోగులు శ్రోతేంద్రియాది సమస్త ఇంద్రియములను సంయమనమును అగ్నియందు హోమం చేస్తారు. సమస్త ఇంద్రియములను తమ వశం చేసుకుంటా వాటి స్వాతంత్రం హరింపచేయుట, వాటికి మనసును చిలింపచేసి శక్తి లేకుండా చేయుట, వాటిని సంసారిక భోగములందు లగ్నం కాకుండా చూడడాన్నే ఇంద్రియములను సంయమనమును అగ్నియందు హోమం చేయుట అయి ఉన్నది. మరికొంతమంది యోగులు ఇంద్రియరూప అగ్నియందు శబ్దాది సమస్త విషయములను హోమం చేస్తారు. కర్ణముల ద్వారా నిందాస్తులను ఇంకా ఇతర అనుకూల ప్రతికూల శబ్దములను వింటూ, నేత్రముల ద్వారా మంచి చెడు దృశ్యమును తిలకిస్తూ, జిహ ద్వారా ఇష్టాయిష్ట పదార్థముల రుచులను ఆస్వాదిస్తూ, ఇంకా ఇతర సమస్త ఇంద్రియముల ద్వారా కూడా ప్రారంధానుసారము యోగ్యతను అనుసరించి లభించే సమస్త విషయములను అనాసక్తి భావంతో స్వీకరిస్తూ, అంతఃకరణలో సమత్వ భావమును నిలుపుట, భేదబుద్ధితో జనించు రాగద్వేషాదులు, హర్షశోకాదులు మొదలగు వికారములను కలగకుండా చూచుకుంటే ఇంద్రియరూప అగ్నియందు విషయములను హవనం చేయుట అనగా, ఎప్పటికూ చిత్తము గంగాజలం వలె నిర్మలము ప్రకాశవంతము కాదో అంతవరకు నిష్కాభావం రాదు. అందుచేత చిత్త సంశోధనకై ఏ కర్మలు చేయబడినో వాటిని గీత యజ్ఞమని అనుచున్నది. కామక్రోధాదులను జయించుటే ఒక మహాయజ్ఞము. బాహ్య సంయమనం వలన విశేషమైన లాభం కలగదు. బాహ్యానికి లంగోటా ధరించి బ్రహ్మచారిగా ఉండే ఏర్పాటు చేసుకున్నను కానీ అంతర్యంలో నా హృదయము రమణీయముల కటాక్ష వీక్షణలను గూర్చి, సుందరమైన ముఖమండలం గూర్చి, వారితో సహవాసం గూర్చి చింతిస్తూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి బ్రహ్మచర్యం వలన అంతరిక లాభం ఏమి కలుగుతుంది? ఏమీ కలగదు. గృహస్థ మార్గంలో అడిగిడి వివాహమాడిన తన పత్నిని తప్ప మిగిలిన ప్రతి స్త్రీని తల్లి, చెల్లి, కుమార్తె అనే దృష్టితో చూస్తూ నిరంతరం హృదయంలో పరమాత్మ చింతన ఎవరు చేస్తూ ఉంటారో అతడే ఇంతకన్నా ఉన్నతమైన బ్రహ్మచారి. కర్మలతో పాటు మనసు కూడా వాటితో కలపవలసిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే నిజమైన చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది. పైకి మనం ఎవరికో నమస్కరిస్తూ ఉంటాము. అయితే తలను మంచి ఆ బాహ్యక్రియతో పాటు అంతర్యంలో మనసు కూడా వంగకపోయినట్టయితే ఆ బాహ్యక్రియ వ్యర్థమవుతుంది. లోపల బయట రెండూ ఒక్కటవ్వాలి. బాహ్యంగా ఒక శివలింగంపై నిరంతరము జలధార పంచుతూ అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఆ జలధారతో పాటు మానసిక ఆలోచన ధార కూడా అఖండముగా జాలువారనట్లయితే ఆ అభిషేకములకు విలువేముంటుంది? అటువంటిప్పుడు ఎదురుగా ఉన్న శివలింగము రాయే, నేను కూడా రాయే. ఒక రాయి ముందు మరొక రాయి కూర్చుంటే దీనికి అర్థము. మన కర్మలు యజ్ఞకర్మలుగా ఎప్పుడు రూపాంతరం చెందుతాయనగా మన బాహ్యకర్మలతో పాటు అంతరంగమందలి చిత్తశుద్ధి కలిగిన కర్మలు కూడా సంయోగము చెందినప్పుడే. శరీరము మనసు వేరువేరు వస్తువులు.
అందుచేతనే సాధన కూడా రెండింటికి వేరువేరుగా ఉంటుంది. రెండింటినీ కలిపి కూర్చుండి చేసినట్టయితే ఫలితం చేత చిక్కుతుంది. మనసు ఒకవైపు, శరీరం ఒకవైపు ఉండరాదు. అందుచేతనే మహాత్ములు భక్తి యోగంలో బాహ్యంగా తపస్సు, అంతరంగంలో జపము చేయమని నుడివినారు. ఉపవాసాది బాహ్య తపస్సు చేస్తున్నా అంతర్యంలో మానసిక జపము చేయకున్నట్లయితే మొత్తం తపస్సు అంతా వ్యర్థమవుతుంది. ఏ భావంతో మనం తపస్సు చేస్తున్నామో ఆ భావన అంతర్యంలో నిరంతరం ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి. ఉపవాసం అనే మాటకు అర్థం ఏమనగా పరమాత్మ చెంత కూర్చునుట అని అర్థము. పరమాత్మకు సమీపంగా మన మనసు ఉండాలి. ఇందుకోసం బాహ్యభోగము తలుపులు మూసివేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. అయితే బాహ్యం నుండి విషయభోగమును విడిచిపెట్టి మనసులో పరమాత్మ చేయనట్లయితే ఈ బాహ్య ఉపాసనలకు విలువేముంది? భగవత్ చింతన చేయకుండా ఆ సమయంలో భోజన పదార్థముల చింతన చేస్తున్నట్లయితే అది మహాభయంకరమైన భోజనం అవుతుంది. విషయ చింతనతో కూడిన మానసిక భోజనం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మించిన భయంకరమైన వస్తువు మరొకటి లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।